Hello, dear students. Today we will discuss worksheet number 51. Class 10th Science Carbon and its compounds, saturated hydrocarbons and unsaturated hydrocarbons or carbon compounds. As we have studied till now, hydrocarbons are the molecules containing hydrogen and carbon atoms that are bonded to each other and may or may not contain other atom. These hydrocarbons are classified into two distinct categories, saturated and unsaturated. तो हम देख लेते हैं सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में क्या डिफरेंस है. टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन. सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स इन विच ऑल हाइड्रोजन एंड कार्बन एटम्स आर बॉन्डेड टुगेदर विद सिंगल बॉन्ड्स होते हैं इसमें. अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स इन विच ऑल कार्बन एटम्स आर बॉन्डेड टुगेदर विद डबल और इवन ट्रिपल बॉन्ड्स. दीज आर मोर रिएक्टिव देन सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स, यानी इनमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं. एल्केन्स, नेम एंड जनरल फार्मूला है एल्केन्स CnH2n+2 और एग्जांपल है मीथेन, एथेन, प्रोपेन. एंड एल्कीन्स का जनरल फार्मूला है CnH2n. एल्काइंस CnH2n-2, यानी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के एग्जांपल हुए एल्कीन्स एंड एल्काइंस. एग्जांपल है इथीन, प्रोपीन एंड एल्काइंस के एग्जांपल है इथाइन, प्रोपाइन. आप देख सकते हैं इथाइन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर और इथीन का इधर, और इधर इथेन और मीथेन के इनके डॉट स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं. कोवलेंट बॉन्ड बना रखे हैं, शेयरिंग कर रहे हैं. ये एक जैसा आप देख सकते हैं मीथेन में हाइड्रोजन के 4 एटम के साथ कार्बन का एक एटम ने शेयरिंग कर रखी है इलेक्ट्रॉन्स की, और इन सब ने भी chain structure. There are the carbon compounds methane, ethane and propane containing respectively 1, 2 and 3 carbon atoms. Such chain of carbon atoms can contain many more carbon atoms. यानी चेन के स्ट्रक्चर भी बनाते हैं कार्बन के कुछ कंपाउंड, जिसमें है कि इसमें मेनली है मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन एंड हेक्सेन. आप देख सकते हैं इसमें चेन टाइप का स्ट्रक्चर है. ब्रांच स्ट्रक्चर. The carbon skeleton with 4 carbon atoms, butane, shows 2 different possible skeletons. इसमें आप 2 तरीके देख सकते हैं ब्यूटेन के. Filling the remaining valency with hydrogen we get structure. Here both these structure have the same formula C4H10. Such compounds with identical molecule formula but different structure are called structural isomers. Ring structures. कुछ रिंग की तरह स्ट्रक्चर ही बनाते हैं hydrocarbons. Some compounds have carbon atoms arranged in the form of ring, easy. For example, cyclohexane has molecule formula C6H12 and the following structure. आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर. They can be saturated or unsaturated. Example, benzene. Functional group. In a hydrocarbon chain, one or more hydrogen can be replaced by halogen, oxygen, nitrogen and sulfur such that valency of carbon remains satisfied. These replacing hydroatoms and the group containing these confer specific properties to the compound regardless of the length and nature of the carbon chain and hence are called functional group. And here you can see the functional group. These are the halogens ClBr, and then alcohol, aldehydes, ketones, carboxylic acids. Let us discuss the questions now. Draw the electron dot and bond structure for pentane and propene. You can see here. This is pentane bond structure and this is pentane dot structure. Propene dot structure and propene bond structure. You can see here. Question number 2. Draw the electron dot and bond structure for ethane. How many bonds are necessary between the 2 carbon atoms in order to satisfy their valency? 1 bond. Here you can see the structure of ethane and 1 bond is necessary. Write the molecular formula of cyclopentane and also draw its bond structure. Molecular formula is C5H10 and here you can see its structure. Difference between saturated and unsaturated hydrocarbons. As we have already discussed, saturated hydrocarbons
Hydrocarbons in which all hydrogen and carbon atoms are bonded together with single bond. Examples are alkanes, and alkanes में example है methane, ethane, propane. Unsaturated hydrocarbons in which all carbon atoms are bonded together with double or even triple bonds. These are more reactive than the saturated carbon compounds. Alkenes, alkynes. तो alkenes में example आप दे सकते हैं ethene और propene, और alkynes में ethyne और propyne. What are the functional group? What is the formula of functional group of alcohol and aldehyde? In a hydrocarbon chain, one or more hydrogen can be replaced by halogens, oxygen, nitrogen and sulfur, such that valency of carbon remains satisfied. These replacing hydro atoms and the group containing these confer specific properties to the compound regardless of the length and nature of the carbon chain, and hence are called functional group. Here is the functional group of alcohol and aldehyde.